पे भाग रहा था छोटे, वो नहीं मरा। उतर जाता है बंदा, वो मरता नहीं है तो उतर। तू किधर रहा है इधर से डायनो पे? फायर कौन मार रहा है? पता नहीं। खोती के सर। हाथ उठाता है। आजा, खाली हो गया ये घास वाले रिकाल। कहाँ साला निकाल कौन सा? ये घर वाला जहाँ पे रिकाल नहीं हो शॉप। शॉप पे? चल वहाँ आ रहा हूँ। अगर सेंटर आएगा तो ये वो बीच वाले घर भी खाली सेंटर हैं नहीं आ बिल्कुल। रहा, शॉप पे जा रहा हूँ। बीच वाले घर भी दोनों खाली हैं। पीछे वाले कौन सा? ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अबे 4 घर हैं जो मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे। बस शॉप पे बैठा हूँ मैं। एक गोली का डायंगा, मैं उतर गया हूँ, घर में बैठ गया हूँ। ठीक है वाले में। अबे नहीं, अभी याद है, मैं रिकाल तो तेरे को किल दे देता मैं। तो बंद हो रहा है रिकाल। घूमने अभी भी नहीं हूँ मैं। किधर है? मैं डाइनो दिख जाएगा तेरे को, रोड की तरफ हूँ। जोन है अभी उन घरों में। आ जाना तू इधर, आजा घास वाले घरों से। टप के तीन घर रोड है की जो तरफ आजा। तीन घर जो है हाँ। मेरे आगे ही हैं। एक लंबे वाला और 2 बड़े वाले, डबल स्टोरी वाले। डायनो पे दो जगह। हाँ, मैं घर में ही बैठा हूँ। इधर इधर। डाइनो देखेगा तेरे को। अरे अच्छा उधर है। इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। तू 3 घर मेरे को पता चल गया तू कहाँ की। ये रहा तू, नीचे घूम रहा। तू कहाँ है? मैं ये रहा ऊपर हूँ, घर में सी। मैं पीछे वाले में जा रहा हूँ। ठीक है, बराबर वाले घर में आ गया मैं। तू वो खोल लेना स्क्रीन में, जो पाँव के निशान दिखाता है, बंदा होता है तो। कैसे बताइए? वो पता नहीं कैसे खोलते हैं, मेरे को भी नहीं पता, रुक। सेटिंग। सेटिंग में जा, जहाँ पे एम असिस्ट है ना। ऊपर कंट्रोल, बेसिक से कंट्रोल्स हैं और एडवांस कंट्रोल्स हैं। हाँ एडवांस कंट्रोल्स में जा, नीचे जा। हाँ एम असिस्ट दिखेगा तेरे को एक। हाँ। उसके बराबर में देख, स्क्रीन आईडी मार्क्स लिखा हुआ है। मार्क मार्क से समझ गया। फ्रेंड दी तेरी। इसको क्लासिक मोड कर दे बस। क्लासिक मोड ही है। हाँ तो दिखाता है ना, मैं तो स्क्रीन पे दिखा रहा है। कौन में है तू? हाँ, मेरे पास ऑन है अभी। मेरे पास नहीं है। तो नीचे आके बैठ जाइयो अगर नहीं है तो। चलो क्या है? फटे किट मिल गई। फिर तुम, बंदा आ रहा है वो। मैं आराम से बैठा हूँ ना, साउंड दे रहा ना कुछ। अब उसको डाइनो को मेरी गोलियां लग गई, वो मर गया। बैठ दी थी। इजी हो गया खेल ले बस ये। तीन बंदे। अरे जोन नहीं है, कहाँ जाऊँ? नीचे बोल रहा हूँ ना, नीचे बैठ जा कमरे में। अभी भी जोन नहीं है। क्या कर? हम्म। डायनो सीट पे तो मैं ही रहूंगा ना।
डायनो तू उठा, मैं नहीं पैदल जाऊंगा। मैं भी पैदल ही जाऊंगा। तो लेफ्ट पे जा, मैं राइट जा रहा हूँ। मैं राइट जाने की कह रहा हूँ। या तो राइट जा, फिर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। मैंने बस जोन पकड़ना, लेफ्ट राइट को मैंने क्या करना है। ये लेट ही है ना जाके। हाँ। मैं आगे जा रहा हूँ। आगे तू जाके चेक कर, बंदे बंदे तो नहीं है इधर ऊपर की Watch तरफ। out! है ना, सांप बन गया हूँ मैं। ओ भाई साहब, ये रहा एक बंदा। मार 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 मार। एक ही रहता है। एक पे आ रहा था। कौन है ये, तू चल रहा है? नहीं, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो रुका हुआ हूँ नीचे। चल तू जा, हो क्या जा, मैं खाना खा लूँ। चल रहा। अबे 57 तो डायरेक्ट। बहुत गिरती है आगे जाके। 18 किल तेरा प्लस कोई तुक्क है बनता ना, है। 14 प्लस तो मिला है मुझे। मुझे चले तो अगर मुझे तो 13 मिला है, 18 किल। 18 कितने खेलते हैं। चल तो खेल भी ले। ठीक है, तू हो क्या, बस मैं ये एक खाना दो खा गेम रहा खेल, हूँ। एक गेम खेल के फिर मैं खाना खा रहा हूँ। मैं बस ये वो मोड खेल के फिर मैं आता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियो। ठीक है, व्हाट्सअप। मत वाओ मोड लगाओ यार, मैं एक ये मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। एक गेम खेल बोलो नहीं, बोलो। लिविक नहीं, वाओ मोड लगाओ। अबे लिविक नहीं चलेगा। बोलो। वाओ लगाओ। यार हम वैसे नहीं खेलते ना जैसे लोग खेलते हैं। हम एक घर में थोड़ी ना छुपे हुए थे। और ये वाला सिराज ने ऐप डाउनलोड कर। मैं बड़े वाले घर में था, शेख में छुपा हुआ था वो। छोटा सा शेख था ना वहाँ पे। जब आपके सामने दिख जाए ना बंदा और आप उसको ना मारो, फिर पड़ता है बैन। हम देखते ही लेकिन नहीं एक दूसरे की डाउनलोड तरफ। नहीं है। नहीं यार, मैंने खाना खाना है, मैंने खाना ही नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी सुबह। चलो ठीक है, ओके।
lobby, or at least Rules is going to be waiting for his teammates to join him. Killer being taken by the players of Quantum Rage. Well, now DRS down to the last 2 players. Do you think they're going to be able to make it up this hill? It is a tough task and a tough ask as well. But the circle is sort of covering even DRS, so I highly doubt it's going to be a tough journey for them. Quantum Rage is exactly on the top, and for Quantum Rage, the next big competition is in the name of 4 Miracle Vibes. If 4 Miracle Vibes, they step foot on top of this mountain, it indeed will be Grim Reapers knocking on your door. And Quantum Rage will need to deal with that as well. The wrath of 4 Miracle Vibes, and you do not want to be on the receiving end. We've seen one of those massacres this team can cause up. Even Maptex, they've got all the players alive. Some interesting names. Miracle Vibes, Maptex, TRS. A lot of big contenders here. NB Esport as well on our screens. Dealing with the players of Maptex. 2 knocked out by DRS. NB, this is your opportunity to go for the push, secure those points. Leon and Baron, 2 players left standing from the side of Maptex, but utility being lobbed towards them from everywhere is causing them a lot of trouble and a lot of hurt. And look at this, NB, they're going for the push. Leona is going to be the last player standing in the way of NB Esports and Maptex's early elimination. While the other lad, Baron, is going for a revive, but the nade from Delta is going to make sure Kisei is going to be on his knees. And well, NB Esports, few shots of their own are going to make sure that Maptex is not going anywhere from here. Down to 6 teams, 16 players. Things looking very good for the players of 4 Miracle Vibes. The competition is just fading away. Well, NB Esports, they sweep that one easily under the rug, and now Fistboy is approaching another fight in the front. It's a DBS in the front lines, and you do not want to be on the receiving end. Fistboy, too many guns in the front, and too much damage to deal with. Eventually falls down, but at least there's an even trade. Even H2SO4 goes down in that moment. NB Esports, the instant cavalry is there too on the board, and they will be able to get the fallen comrade back on his feet. Fistboy back up. A good news for NB Esports. 3 players still alive in that team. There's soon enough going to be another fight brewing up. Will probably be DRS and Illuminate, or maybe Quantum Rage. These teams are right next to each other. And soon enough, the silence will break into a huge chaos. DRS, quite an interesting stance they found themselves with. It's a 2-1 split, while the rest 2 players are all the way in the back. Look at this, Gyante. It looks like he might just get pushed upon. Players of Quantum Rage getting a little too eager, but Fistboy from the side of NB Esport finding an opening. One of the players from the side of DRS biting the dust. Miracle Vibes being extremely cautious as to how they want to control their part of the map, avoid any collision with any of the other teams surviving in the lobby. But let's look at this. We do have Monda on our screens going for the push. Delta being an absolute snake, hiding behind the smoke in the grass. Shots from the Vector failed to hit the marks. He does not have any information where the other player is. This is a very risky move from him, and he is going to pay for it. The DBS is just going to knock him down in an instant, finding the advantage out of nowhere. Massive mistake from NB Esport. Yeah, trying to explore unknown territories, which probably can cost them their life if not played cautiously enough. But then you've got a return knock on the enemy. Sick being able to find that one. Delta goes down. Gyante will probably try to get the fallen man back up as soon as possible. Not a lot of time left. You've got the wall of death as well in the back lines, and the nade's just going to confirm that kill. What a perfect nade. Recently, the accuracy with the nades have been incredible by these teams. Yeah. The utility utilization on the point, and now NB Esports, they're going to make the push on the opponent. Gyante, he was on fire. And even the wall of death is now going to start to close on up. Mondo looking to seal the things, and he does. He takes care of business. NB Esports, they make sure DRS bites the dust, and now they start to move on forward to the hilltop, where Quantum Rage is going to be the next opponent.
They have committed quite a lot just taking out DRS. I wonder if they have enough utility to close out the game. 3v4, the fights are still winnable, but you need to make sure that the smokes, the molotovs, the nades are there. You have that utility to, well, create situations, advantages in those final few moments of the game, but we're down to the top 4, 10 players still remaining. And for Miracle Vibes, they still hold the numbers advantage in their favor. The probability of their win also looking extremely good, 43.75%, while the numbers for the rest of the lobby just continue to drop. For Miracle Vibes, they have control of the zone, and now they will start to take control of their weapons as well, as Doc fires a few shots towards one of the players of NB Esports, but realizing how exposed he was, he's going to back off, join his teammates. For Miracle Vibes is the only team currently with a solid compound, and then you've got NB Esports as well trying to spring back to life, back to action. But Quantum Rage will also swing himself in the action over here, and they're just starting to wipe out any single player that stands in front of them. But eventually, the last man standing from NB Esports seals the deal for Miracle Vibes. Now, like the hungry wolves, getting attracted to all the bloodshed that happened in front of them. Trying to close the distance, trying to get up close and personal. NB Esports knows it's next to impossible to do anything at this moment for Miracle Vibes, wanting to confirm those kills, but unfortunately, it's not going to happen. Eventually, for Miracle Vibes, they take the victory home. A perfect chicken dinner to start things off and to start the final day off. Yeah, the perfect way to start the final day, as you mentioned, but the biggest question remains, how many points do they have? And the answer is 20. It is going to still keep them on the second position in the overall rankings, but with Stalwart taking a tumble in this game, what's the difference? And of course, let's not forget, Maptex also had a decent run in this match, so a lot of questions left to be answered, but all will be said and done after this very short break. Welcome back, ladies and gentlemen, after that fantastic game of Erangel. And, well, you've got 4 Miracle Vibes closing on the lead against Stalwart Esports. We talked about the room for error, the room for margin. It's quite slim, and Stalwart Esports, definitely, they tripped over their own shoelaces. And now it's given a huge opportunity for 4 Miracle Vibes to take that throne back in their hands. I mean, we did talk about before we began the first game how 2 games can change everything in the overall ranking and how the competition between the top 2 teams can be shifted. Well, we are halfway there. Now, all I have to see is what the difference between a Stalwart and 4 Miracle Vibes is going to be, and also what is Maptex going to do about the other teams that are above them. T2K as well. T2K not really having a fun time in this game. They were the first ones to lose CO. The first player to go was from their team as well. So, I mean, a lot of challenges for them to deal with, but hopefully in the next few games they do recover, because they also do stand an opportunity. Like, let's not forget, 5 games can definitely be enough. If you play things right, you can go ahead and secure like around 80 to 70 points easily in those 5 matches. And I think that can change everything for T2K as well. So, I mean, now it's just time to look at the stats, I guess. Yeah, exactly. We'll be able to take a look at the stats and see exactly how the previous game was structured and how 4 Miracle Vibes got that exact win. Considering it was the Northern Circle, we had huge concerns for both these teams, 4 Miracle Vibes and even Stalwart Esports. And that's what exactly happened. Stalwart Esports not able to navigate the clear pathway, and they just got caught in the rotations as well. They were not having a great time, did not find a solid position for themselves. And then you take a look at the MVP, and it's going to be Doc 922 with 8 eliminations, 549 damage. I mean, it's Doc. What do you expect? If you're going to see 4 Miracle Vibes win, you're probably going to see Doc on top of the board. I mean, for sure. And as you were mentioning, I mean, these 2 teams, 4 Miracle Vibes and Stalwart, they were the furthest away from the zone. And yet, we saw 4M walk away with a phenomenal win in this very first game. I think one of the reasons has to be the individual performances that are brought to the table by the players. And along with that, the level of patience they displayed in those moments of the game where we knew they were in an awkward spot. A fight at that particular instant would have been detrimental to their result. But
They realized that as well. They backed off. They waited for a better opportunity, and when the opportunity presented itself, they did not miss. Exactly. I mean, the player focus. Look at this. Yeah, but I think so. We really need to talk about Quantum Rage over here, right? I mean, it's one of those teams that is still struggling and having a great performance like that in the first game is definitely going to boost their confidence up. But it's not going to do a lot. It's not going to have a huge impact inside the tournament. But at least they can try to fight for the pride, right? Yep. And man, I'm just waiting for the points. I'll be honest right now. I want to see what the chaos is going to be in the overall leaderboard. We do have the match summary right now on our screens. Doc definitely doing a phenomenal job. 8 eliminations secured. Delta is going to be the man following it with 5. CNA on the 3rd, along with Viper, both the players with 4 eliminations each. On towards the highest damage numbers, I think DRS they could have had a better game had this stuck together. That 1-2 split was a little bit questionable. It was fine when they were it was fine until I think 4 minutes ago when they were dealing with the players of Maptex, and we did have another team charging towards them. But later on, when it was just Illuminate Crew and Quantum Rage right up above them, I think that is when they did not expect the other teams to be as aggressive as they were, and I think that is what caught the players of DRS off guard. But we do have the match rankings. 20 points for Miracle Vibes, Quantum Rage with 13. We have Maptex with 5 points, Stalwart with 5 points. Right. I mean, but these 5 points do benefit Stalwart as well. The difference before the game was 33. All right, I'm going to crunch the numbers and come back. Yeah, not too good. I'm not good at all. But listen, the only thing I care about over here is the top 2 and the money that's on the line. All right, let's be honest. And also the bragging rights for the teams and the slot for PMWI. There's so much for grabs over here, Johnny. The amount of money that's on the line too, it's incredible. By the way, how much money will you take to shave your beard? Are we talking dollars or INR? It's your answer. I've never seen you with a clean face. 1K USD. Like non-bearded face. 1K USD. You haven't been here long enough. I think the fans, the viewers that are
Reloading! Team match, let's go. The blue team has scored for the first time! Cover me! Expired! Reloading! Enemy down! Nice shot! Enemy down! Cover me! Nice shot! No mercy! Reloading! The blue team is in the lead. Kill! Cover me! Killing spree for the blue team! Target down! Reloading! No mercy! Cover me! Reloading! Cover me! Killing spree for the blue team! Great, you're about to win. The blue team is heading to a perfect win! Reloading! Enemy down! Marked a location. Blue team victory.
Team match. Let's go. First point for the red team. Nice shot! Cover me! Reloading! Target down! Enemy down! Killing spree for the red team! The red team is unstoppable! Nice shot! Clear! The blue team is unstoppable! Killed! Reloading! Killing spree for the blue team! Target down! Enemy down! Reloading! The blue team is in the lead. Watch out! Expired! Dead! Cover me! Target down! Reloading! Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team! Blue team victory.
देख ली। 60 और 60 अन्ना लगी से है। इस बंदे ने ना, उस बंदे ने ये कहा है मुझे, दूसरे उसके यार ने, उसने कहा ये हारो अगली बैटल मैं तुम्हें जिताऊंगा, और इसके साथ मैं तुम्हें बोल क्या 5,000 वाला गारंटी है? हेलीकॉप्टर भी मारूंगा, और हेलीकॉप्टर भी मारूंगा। कल ये बात से वो मुकर बैंड गए, दी हमारी तेरी डील नहीं हुई कि करेगा, मुकर एंड पे जाएंगे। ना पॉपुलैरिटी बैटल के जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें मारूंगा। अगर ये हार जाता है ना एंड पे, मैं इसे जो मेरा एंड में मारूंगा इसे। इसके दोस्त कहते हैं मेरे दोस्त बढ़ा रहे हैं, मैं उनको नहीं कहता, वही कहता है बंदा रोमियो। ये काट के चले जाएंगे तेरा बड़ा। और मैंने कहा मैं खुद खेल ही नहीं, मैंने कहा खुद खेल ही नहीं रहा मैं, एंड पे करेंगे अगर तो नहीं तू होता है, खेल। वरना रैंक। खेल तू खेल, अभी खेल, पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, खेल। यार इतना ऊपर खेलने आ से गया कुछ इसको। नहीं होता, पॉपुलैरिटी जाया करनी है यार, पॉपुलैरिटी जाया करनी है। नहीं ना खेल ना, अगर जो चिकन चिकन पड़ रहे हैं वो तो लगवाना। मैं लाजिम वो तो मैं लग बोल रहा रहे हूँ, हैं, ये गाड़ी। वो तो लग रहे हैं। मेरी थी 8,000 थी, इसकी थी 35,000। अभी भी वही जब फर्क मैं चल इसकी रहा। लॉबी में गया, हाँ हाँ, जब मैं बीस इसकी हजार लॉबी में गया हूँ फौरन से मेरी हुई है 36,000। इसने कहा तुम बढ़ा रहे हो पॉपुलैरिटी, मैं नहीं खेल रहा फिर। मैंने कहा यार तुमने तूने बढ़ाया, नहीं मैंने तो बढ़ानी थी ना। तू रात को पढ़ता, तूने उसने नहीं कहा बढ़ानी उससे, थी। हाँ, उससे दूसरे ने कहा, उसने कहा तुम 50,000 बढ़ाओ, हम 3 प्लेन मारेंगे और बस। नहीं ना तो नहीं करना था ना, देखो अब मैं पे पंगे नहीं कर रहा ना अभी। जो होगा रात को होगा। नहीं नहीं उसी ने भेजी थी रिक्वेस्ट मुझे, मैंने कहा यार बात क्यों, वो बंदा अच्छा था, उसके दोस्त हरामी है। अब मेरे को 8 हजार पड़ी है ना, इनके मैं बोल रहा अकाउंट हूँ। पे, सही है। आखिरी के 12 बजे तक ना ये फिर शुरू करूंगा मैं। हाँ उनके दोस्तों को अकाउंट में यूसी ऑलरेडी लोडेड है आज। हाँ भाई, वो पैसे वाले लोग हैं, बहन दी तेरी हराम का पैसा आ रहा है, क्या करेगा बंदा। हाँ हाँ, तू ही करवा दे पॉपुलैरिटी मेरी यार। भाग जाए यहाँ से, तू करवा दे। नहीं मैं चल। फ्री मैं वाले तो भी सेंड नहीं करते, फ्री वाले भी सेंड न, नहीं करते। क्यों सेंड करूँ? कांडू इंसान, मैं दूसरे की बात करूँ, तेरी बात नहीं तू कर रहा। तू तू तो सेंड वैसे ही नहीं करता। तू सेंड तो कर मेरे पास, तो सेंड गाड़ी शाड़ी मार। ना, ये मुझे बैटल जीता, मैं तुझे गाड़ी मारूंगा, 2 गाड़ी मारूंगा। चल यहाँ से आगे ये हो जा, बैटल जीता, पेट्रोल जितवा। ये बैटल भाई जीता। इतना फालतू टाइम ही नहीं है, मैंने सो जाना है 10 बजे रात। बस कर दे, बस कर दे, 10 बजे सोना है, फिर 3 बजे फिर आना है। 3 बजे नहीं आता, मैं सुबह आता हूँ 6 साढ़े 6 बजे। बस कर ले, बस कर ले, 5 बजे खत्म हो जाएगा बैटल। बाढ़ में जाए, हार गए तो हार गए, मेरे को मेरे पॉइंट हो गए पूरे। कितने पॉइंट हैं? 80। कितने? 79 है, एक पॉइंट चाहिए। 79 है मेरा भी। पिछले सीजन ना, पिछली बार रह गया था, PK 4 होने में सिर्फ 1 पॉइंट रहता था। अब ना मेरे हैं फिलहाल 58। एक बैटल जीत गए, एक बैटल हार, 2 बैटल ना, 2 बैटल जीते हैं, एक हारी है। अल्टीमेट निकाल रहा है, अल्टीमेट मैंने तो सुना तो निकाल अनस। हाँ, बहन दी तेरी पेड़ में लगे हुए हैं पैसे।
ये अकाउंट बाय कर लिया है, अभी तक तेरे पास पैसे नहीं है, आईपैड पे तू खेलता है, अभी भी तू गरीब नहीं, है। खरीद करने से पैसे आ जाते हैं, वाह वाह, बहुत और अच्छी बात कही आपने। पैसे होते हैं तो खरीद सकते हो ना। हाँ, तो फिर पैसे क्या खर्च ही नहीं होते फिर जब खरीद करते हैं, वो क्या फ्री में देते हैं? ये भी सही है, क्या पता देने तुम क्या और तो कुछ। तू देता है और कुछ तो समक्सी ने बताया मेरे को। हाँ स्नैक्स ने बताया है, खुद ही हम खाते हैं 20-20 रुपए के पीछे। तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है इनका, अगर तू इनको देख भी लेना तो फ्रेंड से निकाल देगा। यार छोड़, तू पपलेटी मार, इधर हम्म, मांगने आया हूँ मैं, मजबूरी है मेरी। ये लो फकीर, ये लो। ये नहीं, वो भी मार, ये लो, क्या ये लो। क्या ये लो, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। वो मार, वो 5 वो मार। क्या वो, नाम बता पहले। बीपी कॉइन वाले मुर्गी। मुर्गी नहीं है मेरे जिंदा, पास। जिंदा मुर्गी नहीं भाई, मार इधर, भैन दी तेरी लाना तो तेरी जिंदगी पे। मैं एक तो तेरे मिनट को बंदा बाइक बुलाता हूँ। भेजने वाला था। एल भेजने वाला था भाई, और ये वाली भेजने पे बहुत पड़ती है तुझे। भेज तो दी मैंने, और क्या 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 भेजूं, और बता। सिल्वर 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 सिल्वर। सिल्वर होएंगे तो भेजूंगा ना भाई। मैं 1 मिनट शॉप से वो लेके आ रहा हूँ, 100 सिल्वर पड़े हुए हैं, जाए ना बस हो जाए। C7 प्लेन मार दे एक, बात खत्म कर, प्लेन मार के। इस पे बैठ के जाएगा तू। मैं प्लेन पे बैठ के जाऊंगा। पहले ये बता, तू रहता कहाँ है? सारी बात तूने उससे पूछ ली है, फिर मेरे अब पास कुछ एल नहीं है। मेरा पूछिए, खोती का बच्चा होगा जिसने उससे पूछी होगी, रहता कहाँ है? वो तो तू है, इसमें कोई शक नहीं है। खोती का बच्चा होगा, मतलब तू है ना। तू 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 तेरी बात की है। मैंने पूछी ही नहीं है जब बात ही। मुझे समझ नहीं आता तू ऐसे ऐसे गानों को रखता क्यों है अपनी लिस्ट में। ए, ए, जो हेल्प अरे कराते अगर हो हम वो ठीक है। रखते हैं, पता है? जो हेल्प जो कराते हो, कभी भी बंदा किसी को कॉल करे, आ जाए बंदा, वो बंदे चाहिए हेल्प होते, किस ना चीज कि तेरे किस जैसे। चीज की, किस चीज की हेल्प है। ना कि तेरे पूरा जैसे। एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन बेटा करेगा। रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, गंदी जहनीत वालों। तो यार बंदा पूरा बताता है ना। गंदी जहनीत तो देख रहे हो उसकी। और इसके साथ साथ तू 800 सब्सक्राइबर का चैनल का एक मालिक बैठा है, तू अभी तू कहता है मैं गरीब हूँ। हाँ, पैण दी तेरी, लाखों कमा रहा हूँ मैं तो। तू तो बैठा हाँ है, जी, तू क्या कर रहा है ये बता। मैं बैठा नहीं, मैं खड़ा हूँ। बता बेटा बता, जल्दी कर, तूने क्या कर लिया, तू उखाड़ क्या लिया तूने? हाँ जी, इसलिए तो रेड सूट आप हो गए थे वो करके आपके मेहनत तो करते 1300 करते। है ना, आपने क्या उखाड़ा है? बहुत कुछ। बहुत कुछ पैण दी तेरी, उसको सिर्फ बनाना नहीं होता, उसको तो यूज भी करना होता है, पता है? हम तो बना के भूल जाते हैं, यही बात है। यही बात है, मैं बताता हूँ तू कैसे बात है। तो यार 92 हाफिज ने नाम चेंज कर लिया है। मैंने समझा ये कौन ऐड हो गया मेरे पास, 974। सीधा सीधा बोलना, मेरे पास 90 या फिर रेड है बस। क्या बता, नहीं नहीं ना, बताने की क्यों कर रहा है? बस अगर मैं बताना होता तो फिर बताए ना दे, बताने की इससे क्यों क्या कर रहा होता है है। भाई, ये बताने की क्यों कर रहा है? बात देख रहे हो? सही है यार। देख रहे हो कैसे बातों बातों में बता रहा है कि बंदे सही है मेरे पास यार, 8 मैं जा 92 रहा हूँ, मैं अभी। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा नहीं, 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 तो बता रहा हूँ। क्यों है? हमने तुझसे कुछ पूछा कि 90 अभी या रैंक या कुछ भी? मैं ऐसी कोई रैंकिंग बात में थी देख बीच रहा में? था ना, मैं रैंकिंग में देख रहा था। तू देख रहा था? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी और तो ये चल। जो और ये जो नाम है नंबर पे झांटू खड़ा है, ये भी मेरा जानने वाला है। अच्छा, ठीक है। वो क्या कह रहा था और कुछ वो, टॉप वन? नक्की नक्की गांडू क्या कह रहा नहीं था, टॉप, तीसरे नंबर वाले को नीचे करो। नहीं ना, टॉप टॉप वन वाला जो है अनस भाई, वो भी तेरा फिर फिर कुछ डिवाइस होगा। में भी तो यार मैंने टेंशन सुना ना लो। अन्ना से ये दोनों इकट्ठे खेलते हैं। लो, कौन है?
ये दोनों अरबी मैं ऊपर वाले मुझे पिकबासी पे आ गया हूँ यार। बस भाई वो नहीं खेलते, ये 86 पे आ खौफ गया। वाले 11 बंदे लेके खेलते हैं। आओ आओ ऊपर आओ। इकट्ठे इकट्ठे खेलते हैं नथिंग में कर करके अबे वो अक्सर मारे खौफ मैं जो वाले 35 11 36 बंदे खेलते हैं। कल 11 36 पे बंदे था लेके अनस भाई। खेल रहे थे खौफ वाले। 86 हाँ पे आ जी, गया हूँ, 35 सिर्फ 12 दिन हो गए छोड़ा हुआ है। क्या हुआ? 36 से 86 पे आ गया यार। डिवाइस चेंज करने के अभी उसी के चक्कर में लगा हूँ, आईडी नंबर बदलने हैं यार ये फोन की है। नाम भी आया बहुत बार लॉबी में मेरी। वो तो इतना से इतनी जल्दी 86 कैसे आएगी मैच में? ना मैंने तो छोड़ दिया था ना रैंक, बताया नहीं था। 12 13 दिन हो गए। कामन से उतर जाएगा तू, तकरीबन 5300 करेगा तो नहीं उतरेगा 100 में। अगर मैं 500 में रहूँ तो कितने दिन रहूंगा, और अगर 100 से बाहर भी हो। नहीं ना, अगर तेरे को 100 में रहना है ना तो तू वो कर ले, नहीं 5250 यार डिवाइस नहीं है या अभी, इसमें 5300। चल नहीं रहा ना, इशू बना हुआ है एक यूजर का। अगर 100 से बाहर हो गया फिर हाँ, कितने दिन रहूंगा 500 में? 500 में वो रैंकिंग के हिसाब से है ना। नहीं वैसे तो रैंक रहोगे, स्लो होता है ना। बहुत रहोगे रहोगे बहुत दिन रहो, रैंक आए आप। जो 100 होएगा फिर 120 30 40 50 फिर 200 220, इतना लंबा सीन है ये तो। हाँ भाई तुमने ठीक ही कहा था, रैंकिंग अब कुछ ना कुछ रुक गई है। हर हाँ, टीम में रुक जाती है मुझे आखिर। काम काम ये में तो 100 काम काम में में मैंने 13 दिन हो गए छोड़ा हुआ है, मुझे अभी टूर्नामेंट भी याद है 13वां दिन, और अभी भी 100 में हूँ मैं, मानोगे? 36 पे था मैं, 36 पे। जिस दिन से 35 पे अनबैन किधर आ हुई है गया? उस दिन से लगा हुआ हूँ मैं तो। और भाई मैं तू तो पैदा रेशो ही बना मैं फोन में छोड़ दी। तू तो पैदा ही बोलते हो, मांगने नहीं आया मजबूरी है। रिक्वेस्ट मुझे तूने भेजी है, मांग मांग खुद रहा है। मांगने मैं नहीं तेरी आया मजबूरी है। ओए मेरी मेरी प्रॉपर्टी देखो, उसकी प्रॉपर्टी देखो, बताओ तूने कौन मांग रहा है और कौन नहीं मांग रहा। हाँ और रिसेंट भी चेक कर लो, रिसेंट भी चेक कर लो क्या क्या हाँ आया हुआ है रिसेंट भी घंटे चेक कर लो, से। चेक कर लो, रिसेंट चेक कर लो। एक मिनट में हाँ पहले दिख चेक रही करो है, किससे रिसेंट होता चेक है कर लो। रिसेंट। खबर करो रिसेंट तो हो रहा है 50 बाइकों वाला रात का। बाइक का क्या दिखा रहा है, पूरी लिस्ट दिखाना। बाइकों वाला तू हरू भरू, गाड़ियां तो मेरे को भी पड़ी हैं, बता अब रिसेंट में नहीं है, उसमें क्या दिखा करूं? वो वाला, रिसेंट में दिखा नहीं है पहले तो तो। मैं उसमें क्या करूं? गाड़ी पड़ी है, ड्रॉप पड़े हैं, वो चीजें पड़ी हैं, अब बोल। मेरी पॉपुलैरिटी तू देख के दिखा, तेरे में दम है तो इतना। तेरी पॉपुलैरिटी देख के टोटल 7,83,000 है तेरी पॉपुलैरिटी, लांसी इंसान। मिलियन मिलियन करनी है इस पॉपुलैरिटी बैटल में। अबे मेरी हो जानी है मिलियन, मेरी 8,08,30,000 मेरी हो जाएगी। 30,000 जब हो गई। पहली पहली बैटल आई थी ना, मेरी 3,38,000 थी पहली मेरी भी बैटल में, उतनी थी, शुरू शुरू में। उतनी थी जब पहली वाली बैटल आई थी, उतनी थी मेरी भी। जैसे कि तू भी भीख मांगता रहता है बहुत सारी। 80 बाइकें पड़ी थी तब, इसलिए पहली दफा बैटल आई थी और सब्सक्राइब दोस्तों के किए पास है बहुत उसे, बाइकें पड़ी थी। सब्सक्राइब किए है। 80 बाइकें तो एक पहले आईडी पे पहले पड़ी थी मेरे पहले पास। पहले ना ये तेरे पास बैठा बहुत है फाइटिंग मेरी नहीं कराया रेस आती, में, था। बैठा है वो होती है। 71 पे, 72 बैठा हुआ है मेरी रेस में, पॉपुलैरिटी में फर्स्ट नंबर पे, देख ले हाँ जाके। पहले इन्होंने बहुत एक किया है, लाख अब नौ पहले हजार सबसे मारी खाली हुई है किया उसने। है, अब दोबारा पॉपुलैरिटी बैटल दे दी। खाली किया है पैंट किसी निकलवाने लगा ना, मैं दोस्त अपने से तो भूल जाएगा कितनी पॉपुलैरिटी पड़ रही है। फिर कर ले यही। सब्सक्राइब किया है जब आपके अपने से ही चैनल पूरा को। हो रहा है तो किसी और को बंदा बोले क्यों? बोले क्यों बंदा किसी और को, जब अपने से ही पूरा हो रहा है? जब बंदा अगला खुद कर सकता है तो दूसरे के सब्सक्राइब पास किया जाए है क्यों ब्रो, बंदा? सब्सक्राइब किया है। बता। दूसरों का बता क्यों रहा है। दूसरा सा बता तू ला है। मैं किसी मादरे ना नहीं आया, मत भूलिए मेरी। ब्रो, सब्सक्राइब किया है मैंने। चले यार स्टार 8 है नहीं पापन, चलने छोड़ ये फालतू बंदे यार। आइंदा मैंने देखे ना ब्रो, वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। अब क्या बोल रहे हो, चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है। किया है, सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब डन, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब इट। आपने मेरे वाले को नहीं किए हो यार, बाद में कर दूंगा बाद में।
आपने मेरा वाला नहीं सब्सक्राइब किया। नहीं, आपने मेरा वाला सब्सक्राइब नहीं किया। यू डोंट सब्सक्राइब माय वन। आप मेरा वाला कर दो, मेरा वाला आपने सब्सक्राइब नहीं किया और मैं आपका वाला कर दूं। मेरा वाला सब्सक्राइब कर दो ना। اخو شو السكر. hello hello. I will subscribe later, okay? I will subscribe later, huh? تقريبا no bro, another you also can. Bro, you subscribe my one channel, I will subscribe your channel. आप मेरा वाला सब्सक्राइब कर दो ना यार। Yes. अनस भाई आपकी मैचिंग है, मैं आ गया, टेंशन नहीं लो, आपकी मैं भी आ मैचिंग है, मैं गया आ हूँ। गया। किलर हूँ, किलर हूँ, मैं भी आ गया हूँ, ऐसा ही किलर। आप चले जाइए देखिए।
ब्रो विल नॉट। मैंने बहुत बंदों को देखा है, ठीक है, फ्री फायर हो या जो भी गेम, हर बंदे के डाउन व्यूज आते हैं, ठीक है। मैंने 1 साल पहले लाइव करता था, अच्छे व्यूज आते थे, अभी फिर से शुरू किया था, मैंने छोड़ दी, मैंने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और कह रहे हो मैं आपका कर दूँ। इधर छत के ऊपर बैठा हूँ हमारे लिए। मेरे भी पहले जब स्टार्ट किया तो मेरे भी 2530 ऐसे आया थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने बीच में छोड़ दिया, मेरी बेबी हो गया। मानो बिजली राशि भी आमा तू आया। बिजली राहिला।
मेरा छोड़ो, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता? मेरा छोड़ो, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। ये भाई ओके बाय भाई तेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी दिया है। हाँ यार, और तेरी भी? हाँ भाई, और तेरी गर्लफ्रेंड का आज ही बर्थडे है। हाँ यार, चल जल्दी से भाभी का फोटो दिखा यार। भाई मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, और हाँ मुझे रिया के बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारी करनी है। तुम दोनों को भी शाम को पार्टी में आना है, ठीक है? रेडी रहना यार। ओके भाई, मिलते हैं पार्टी। बाय। कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि तुम दोनों की गर्लफ्रेंड एक तो नहीं? अरे नहीं यार, तू पागल है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे जान से ज्यादा प्यार करती है, और मेरा दोस्त भी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता भाई। सॉरी भाई। भाई ये तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तू पता सुननकुम ذكر टारगेट کېږم یا را مخامخ شه ودرېږه سیده ودرېږه د دې سړي مخکې د چیلنج در کوم پښتانه تقریبا چې نوم وي که نه نظر نه سیواس سیمران دي ځای ورشه ورته ګیم ډیلیټ کوئ دا د کوپن چوپ نه ډیلیټ کېږي قسم مې په خدای وي پښتو مختو چا کې نشته چا کې وروره زه په تاسو نن کوم ځکه زه ټارګېټ کېږم یا ځکه زه ټارګېټ کېږم چې هر سړی ګروپ جوړوي او دا وایي چې دې به څنګه راغورځوي وتعز من تشاء وتذل من تشاء رزق من عند الله عزت ذلت الله ورکوي خو په ما ګران یې یاره لا یوه خبره نه مو غورځومه نور ورځو مو ګیم کته که نه ته ورته کله غوړې که نه غوړې قسم دیو کې ټول دقه ده کړې هر سړی د خپلې ایډیا نه د خپلې مور په سر قسم دیو کې چې دوی به ماته سپک نظر نه کوي زه هم د دې د خپو خور یم سبا به هم د دې په تاسو نن کوم ځکه زه ټارګېټ کېږم یا را مخامخ شه ودرېږه سیده ودرېږه د دې سړي مخکې د چیلنج در کوم ماته سپک نظر نه کوي زه هم د دې د خپو خور یم سبا به هم د دې د خپو خور ګډ چې ماته سپک نظر ماته د سپک نظر نه دی کېږي سوال به کوم ما کوې سپک نظر ماړه ډېرې ماته دوره تانګو کنه شیرنده دی دوره تانګو بیا ته زیاړې وکړي بیا یې زلاله زیاړې شیر درته ووایم کرکه مه کوه انسان یم کبرجنه څه وایي کرکه مه کوه انسان یم کبرجنه ستاسو نه ښه ځواني لرم خو خیال یم خیال کوئ لږ غونډه کې مړه دی به ماته سپک په تاسو نن کوم زړه مې تور شو د دنیا نظر مې تور شو د هر زړه مې تور شو د دنیا نظر مې تور شو د هر چا زړه مې تور شو د دنیا نظر مې